Very good morning to all of you. This is Vinita as maths teacher for class ninth from Bal Bharti Vidyapeeth Gohana. Bal Bharti Vidyapeeth, a home of true learning and ultimate pleasure. So, dear students, welcome to maths class. Today we are going to start our exercise with basic concept of exercise 1.6. So, let's begin with some important laws of exponents. So dear, in this exercise we just learned about different type of laws related to exponents. So our first is a raised to power m multiply a raised to power n, that would be equals to a raised to power m plus n. Means to say बच्चे, if we are having two terms, okay, and the base of these two terms are equal. Suppose here also you are having a and here also a, ओके. सो यहाँ पे बच्चे देखिए आपकी बेस तो हमारा इक्वल है एंड पावर इसकी क्या है m और इसकी क्या है n. सो द कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंट लॉ इज दैट व्हेन आर बेस of two terms are same, base are same, and we are having different powers, and these two terms are in multiplication process. बेस सेम है, मल्टीप्लाई करनी है तो पावर्स क्या हो जाती हैं बच्चे, ऐड हो जाती हैं. ओके, सो दैट्स वाई वी जस्ट राइट इट. बेस ए है, वी जस्ट राइट ए, और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. सो दैट्स वाई वी जस्ट राइट इट हियर m plus n. Okay, so for example, suppose we are just taking 2 raised to power 5 multiply 2 raised to power 7. It means base is to be same. बेस क्या है दोनों में बच्चे, 2 है, ठीक है. सो बेस 2 है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. सो वी जस्ट राइट 5 + 7 = 12. So that would be the answer, that 2 raised to power 12. Okay, so according to next exponent law, we are having a रेज टू पावर m एंड रेज टू पावर n. इट मीन्स ए की नंबर की पावर के ऊपर पावर है, टू पावर्स आर टुगेदर वी आर हैविंग. सो वी जस्ट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हम क्या करेंगे बच्चे, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक पावर के ऊपर पावर है. सो दैट्स वाई इट वुड बी इक्वल्स टू ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n. इट मीन्स जो पावर्स होंगी वी आर जस्ट टेकिंग product of that powers. Okay, suppose we just take one example, that we are having 2 raised to power 5 and 5 also as a power, and 2 also are having power of 3. 2 raised to power 5, firstly it is given, after that 2 raised to power 5, 5 raised to power 3. Okay, यानी कि पावर के ऊपर पावर है. Okay, so that's why what we have to do, according to this property we have to write it. So our a is 2, m 5 and n 3. Okay, so 2 as a we just write it here, and powers की क्या हो जाएगी बच्चे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 3s are 15. तो 2 raise the power 15 is to be the solution. Okay, third, a raised to power m divided by a raised to power n. Means to say base same है बच्चे, as you can see in the first point also. यहाँ पे बेस इक्वल था बट ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में थे, तो वहाँ पे क्या होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, और यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है. अगर a रेज टू पावर m है और a रेज टू पावर n है और बीच में वो डिवाइड का साइन गिवन होता है, सो इट मीन्स बेस वही रहता है और जो पावर्स होती हैं बच्चे ऊपर वो माइनस हो जाती हैं. ओके, इसमें मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, एंड इन द केस ऑफ डिवीजन वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द पावर. Okay, so as we are just having the example 2 raised to power 7 divided by 2 raised to power 5, so 2 as it is, and powers m minus n we have to do. So according to the concept, m is equals to 7 and n is equals to 5, so we just subtract it, 7 minus 5, and we are getting 2. तो आप इसको बच्चे यहाँ तक भी एज इट इज़ रख सकते हो, दैट 2 raised to power 2, और आगे अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना है, दैट 2 raised to power 2, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 times. सो यू जस्ट राइट इट हियर, 2 multiply 2 एंड वी आर गेटिंग 4. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट इज डियर a raised to power 0 equals to 1. इट मीन्स बच्चे a की पावर हम 0 करते हैं, डजेंट मैटर, यहाँ पे a एक वेरिएबल ही होगा, इवन इट इज़ एनी नंबर और वेरिएबल.
ये कोई नंबर भी हो सकता है और कोई वेरिएबल भी हो सकता है. इट मीन्स किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की अगर हम पावर 0 लिखते हैं दैट वुड बी इक्वल्स टू 1. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग 5 रेज टू पावर 0, so in that case बच्चे if we are having x raised to power 0 then also we are getting 1 as the solution. किसी भी चीज की पावर, किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की, इफ वी आर हैविंग द पावर 0 इट मीन्स दैट वुड बी इक्वल टू 1. ओके, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट exponent law, a raised to power m multiply b raised to power m means to say powers are same. दोनों की पावर क्या है, m है, पावर सेम है बट बेस आर डिफरेंट. सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द बेस. हमें क्या करना है, बेस की मल्टीप्लाई करनी है. ओके, एंड पावर को जो गिवन होगी दोनों पे सेम ही होगी, वो एज इट इज ऊपर पुट कर देंगे. इट मीन्स वी जस्ट हैव a multiply b raised to power m means ab raised to power m. Okay, so we just take it one example for that. 2 raised to power 5 multiply 3 raised to power 5. 2 raised to power 5, देखो पावर दोनों में 5 है, यानी कि पावर दोनों की क्या है बच्चे, सेम है. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ m 5, a 2 and b 3. So according to that concept we have to multiply a multiply b. So we are having a 2 and b 3. So 2 3s are 6 and we just have to write down the power. So power is to be 5. So 6 raised to power 5, that will be the solution. Next and last, if we are having any number with negative power, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसमें उसकी पावर क्या है, नेगेटिव में है. सो हमारा फर्स्ट step is we have to convert that negative sense degree in positive sense. तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का जो हमारे पास ये टर्म गिवन है हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो p बाय क्यू की फॉर्म होती है वो जो ये q होता है वो ऊपर p बन जाता है और जो p होता है वो नीचे आके q बन जाता है. ओके, सो वी जस्ट हैव टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट. a बाय b, a बाय 1 है बच्चे, सो इट वुड बी रेसिप्रोकल एज 1 बाय a. अब पावर क्या हो जाएगी बच्चे, पॉजिटिव हो जाएगी. तो 1 की पावर 1 है तो 1 रहेगा और a की पावर 1 है तो वो भी क्या रहेगा, a रहेगा. ओके, सो a 1 बाय a इज टू बी द सॉल्यूशन. सो वी जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल 6 रेज टू पावर -1. सो बच्चे आप इसको पहले रैशनल बना दो बाय पुटिंग 1 इन इट्स डिनोमिनेटर. अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो 1 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा. सो वी आर हैविंग 1 बाय 6, पावर नेगेटिव थी, अब ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. सो 1 की पावर 1 1 एंड 6 की पावर 1 ऑल्सो 1. सो 1 बाय 6 इज द सॉल्यूशन. ओके, सो डियर, आफ्टर कंप्लीटिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, now we are going to start our exercise 1.6. So let's begin with the very first question, that find the value of these 3 points. Let's continue with the solution. First, 64 raised to power 1 by 2. So बच्चे firstly we have to write down 64 as the number that would be having the power 2. यहाँ पे जो पावर गिवन होती है ना बच्चे, अगर सपोज यहाँ पे 3 होता तो हम ऐसा कोई डिजिट लेते जिसकी पावर अगर हम 3 करें तो 64 आए. अब अगर हमारे पास यहाँ पे एज पावर 2 है तो हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है यहाँ पे बच्चे एट द प्लेस ऑफ 64 कि अगर हम उसकी पावर 2 करें देन वी आर जस्ट हैविंग 64. सो वी जस्ट टेक इट हेयर 8 रेज टू पावर 2, बिकॉज 8 8 का क्या होता है बच्चे, 64 होता है. ओके, सो 64 can be written as 8 raised to power 2. So you just write it here, 8 raised to power 2 multiply raised to power 1 by 2. 1 by 2 is to be given here, क्योंकि ये तो आपने बच्चे आपने लिखा है 64 को 8 raised to power 2 और यहाँ पे आपके पास क्या गिवन था, पावर 1 by 2. So you have to multiply this power with 1 by 2 and then 2 से 2 cancel out हो गया बच्चे, 2 1s are 2, 2 1s are 2. And you are having only 8 raised to power 1. So 8 raised to power means only 8. Okay, so that would be your solution. Next,
124 raised to power 1 by 3. It means in this question you have to write 125. आपको 125 को एक ऐसे टर्म में लिखना है कि जिस एक ऐसा डिजिट आपको चूज करना है कि अगर आप उसकी पावर 3 करो तो आपके पास क्या रिसीव हो जाए 125. सो वी जस्ट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 5 रेज टू पावर 3 because 5 multiply 5 multiply 5 that would be equal to 125. Okay, so that's why you are having, you can be written 125 as 5 raised to power 3. So now 125 को बच्चे आपने लिख दिया 5 raised to power 3 multiply power already कितनी given है 1 by 3, then 3 to 3 cancel and then you are having only 5 raised to power 1 and then answer will be 5. Okay, got it? Here our third question, let's simplify the following. So 2 raised to power 2 by 3 and 2 raised to power 1 by 5. So we are having base equal and powers are different. So if we are having base equal with different powers and they are in the product, we have to do addition of the powers. हम powers को add कर देते हैं. So we just write in the sense a raised to power m plus n. Now a we have to consider 2 and m is equals to 2 by 3 and n equals to 1 by 5. Okay, so according to that concept a raised to power m plus n, we have to do addition of the powers. So we just take the LCM 3 and 5, LCM is equals to 15. Now 3 5s are 15, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 3 1s are 3. So 10 plus 3 13 by 15. So what's the answer? 2 raised to power 13 by 15. That would be the solution. Okay, next point, 11 raised to power 1 by 2 and 11 raised to power 1 by 4. It means a raised to power m by a raised to power n. अब पावर्स यहाँ पे हैं डिफरेंट हैं और ये जो नंबर्स हैं जो दोनों टर्म्स हैं वो डिवाइड में हैं. सो जब बेस इक्वल हो और वो दोनों टर्म्स डिवाइड में हो तो वो हमें क्या करना होता है बच्चे, सब्ट्रैक्ट करना होता है. सो वी जस्ट राइट इट a raised to power m minus n. अब m we are having 1 by 2 as it is given in the question already and n equals to 1 by 4. Okay, और a हमारे पास base है 11. Now you just do the subtraction for that. Okay, so you just take LCM 2 and 4 LCM, you are having 4. So 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 4 1s are 4, 1 1s are 1. So 2 minus 1 1 और नीचे क्या आ गया बच्चे 4. So 11 raised to power 1 by 4 is the solution. Okay, so dear, thank you, have a nice day.